गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणकम, जय हिंद एंड सत श्री अकाल। आज हम एक पीक इनटू एवरीडे चाइना लेंगे, देखेंगे और इसमें देखेंगे द चाइनीज डोमिनोज। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आर द चाइनीज डोमिनोज डूइंग? व्हाट इज द डोमिनो? डोमिनो एक गुटका होता है कि एक को धक्का लगाओ सारे गिर जाते हैं, जैसे ये दृश्य में दिखाया गया है। और चाइना का हाल यही है। इस दृश्य में तो सिर्फ एवरग्रैंड एंड कंट्री गार्डन का दिखाया गया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट इट also includes its banking sector, it also includes ancillaries, it also includes a lot of things, right? A whole lot of things are involved and there are problems. And we'll focus on them. Everyone talks of China economy going down. चाइना का इकोनॉमी डूब रहा है, ये वगैरह वगैरह। बट मेरा ये है कि ये डूबने का चक्कर तो आई सेड लॉन्ग बैक, किसी ने बिलीव नहीं किया। आज जो मेरा ये है कि ये मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, ये डूब ही नहीं रहा, ये वापस आएगा भी नहीं। इट विल नॉट रिकवर, इट विल जस्ट नॉट रिकवर एट ऑल। और मेरा ये अनुमान है कि 7 to 8 years before it stabilizes and then population crisis will take over. That's for sure. It will remain a big economy. सबको तंग करेगा हमें, right? Before I talk of Chinese Dominoes, today I had a talk with a lot of officers in one of our formations in Arunachal Pradesh. I spoke to them about balance of power and deterrence. वो वीडियो थोड़ा लंबा है, 2-3 दिन के बाद मैं वैसे जारी कर दूंगा, आप देख लीजिए। यू कैन सी इट इन पार्ट्स। दैट्स द वे वी हैव टू गो। सेकंड पॉइंट व्हिच आई वांट टू थिंक इज, अगर आप सोचते हो कि ये वीडियो लंबा है, पार्ट्स में देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ओके ओके, तो विल टॉक ऑफ चाइनीज डोमिनोज, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज आर्टिकल व्हिच केम आउट टुडे मॉर्निंग। पहले बार मैंने देखा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही देख लिया। बट सडनली आई सेड यार दिस में कुछ अलग है, तो इसको पढ़ा मैंने। China's economy has entered न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल होता है, न्यू नॉर्मल होता है, न्यू नॉर्मल। इसको इट्स समथिंग न्यू व्हिच इज हैपनिंग। A leading policy advisor, he's a policy advisor who has written this. I mean, you can go into the article in South China Morning Post and see it. And wants in a call for systemic reform. They want a systemic reform, which might not happen. Okay. What does he say in this? You know, it's interesting. He says, a shrinking and aging population poses a challenge to the quality, spending power, and motivation of China's future workforce, diminishing overall productivity and capital returns, and ultimately hurting the long-term national growth potential. Now, this is a policy advisor of China who says this. ये बड़ा क्लियर बोल रहा है कि भाई आपका आबादी सुकड़ रहा है, आपके पास लोग होंगे नहीं काम करने के लिए, और आपका नेशनल ग्रोथ लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड, दिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चाइना's potential in economic growth will fall further even beyond original expectations. ये भाई साहब हमारा गीत बोल गा रहे हैं 6-7 महीने के बाद, राइट? The bottom is not there in this. We don't know where the bottom is going to come, right? कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल कहानी, क्योंकि चाइना में आज के दिन बहुत कुछ हो रहा है। The mismatch between China's labor market and
structural changes in the industrial sector as it pushes for greater production efficiency means that it will be hard to solve job related challenges including youth unemployment. तो इसका मतलब क्या है? इसका लेबर मार्केट में मिसमैच है। मिसमैच का क्यों लेबर मार्केट में मिसमैच है? लेबर मार्केट बुढ़ा होते जा रहा है और बुढ़ों को प्रोडक्टिविटी क्या होगा? मुझे एक मशीन में लगा दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं मैं, राइट? और सो इसका मतलब इनके जो एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी वगैरह, उसमें भी प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल stimulus which concentrated on infrastructure construction is not going to work under the current economic condition। ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। आप अगर इनका चाइना का गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया सबको स्टिमुलस के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो अपना कर्ज चुका देंगे और बैठ जाएंगे वो खुश। वो जो पैसा है वो अपना पैसा बचा के रख लेंगे, कोई खर्च नहीं करेगा। प्रॉपर्टी में स्टिमुलस देना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी प्रॉपर्टी डूबा हुआ है, उनके पास जरूरत से ज्यादा मकान है। उनको स्टिमुलस देके क्या और मकान बनाओगे? कोई फायदा नहीं है। तो किस चीज का स्टिमुलस देगा चाइना? कुछ नहीं देगा, कुछ दे नहीं सकता। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में चाइना एक बेबसी के कगार में खड़ा है। ओके, ट्रेडिशनल स्टिमुलस ओके बोल दिया। कॉल्स फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ चाइना's हुकू's household registration system which restricts population movement and also prevents rural migrants from enjoying public services in अर्बन एरियाज। ये बोल रहा है ये कि भाई हुकू सिस्टम में बदली करो, ताकि लोग जो गांव में रहते हैं वो शहर में आ सकते हैं और शहर में जो इनका फैसिलिटीज दिया गया है उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, कुछ कुछ एक तरीके से तो ठीक है ये, पर जो चाइना में हो रहा है वो उसका विपरीत हो रहा है। जी जिनपिंग क्या है कि लोगों को रूरल एरियाज में धकेल रहा है। क्यों धकेल रहा है? ये देखिए, calls on urban retirees veterans to return to rural roots to in revitalization push, क्योंकि इनके एग्रीकल्चर डूब गया है। तो ये इसीलिए तो हमने वो इनफैक्ट 6:30 बजे मैंने फूड इनसिक्योरिटी के बारे में वीडियो आउट किया, जो पहले भी किया था उसको एडिट करके आउट किया। लोग है ही नहीं गांवों में, रूरल एरिया में काम करने के लिए, और ये व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो एक तरह इनका रिक्वायरमेंट है कि जो रूरल एरिया में जो फैसिलिटीज नहीं है, वहां जो लोग रहते हैं वो फैसिलिटीज को पाने के लिए वो शहर में लेके आए, मोर अर्बनाइजेशन। दूसरी ओर अगर लोगों को रूरल एरियाज में ना ले जाए, इनको और प्रॉब्लम है। वैसे भी डिवाइड है, क्योंकि रूरल एरिया में जो रहते हैं उनके पास हेल्थ का केयर ठीक नहीं है, वहाँ नौकरी नहीं मिलता, बहुत गरीब है। ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो अभी बाहर आ रहा है एक एक। जब देखिए, जब व्हेन एवरीथिंग गोज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, पर जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो एक एक प्रॉब्लम बाहर आता है। और अब जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो चाइना का हालत है। अभी जाए तो कहाँ जाए ये, राइट? ओके, ये भी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे इसको। ओके, ये सर्कुलर जो है इसका, ये वेटरन्स टू रिटर्न टू रूरल रूट्स हैव बीन साइंड बाय 9 ministries एंड सेवरल गवर्नमेंट बॉडीज, कि भाई जिस जो जो तंदुरुस्त लोग हैं जाके रूरल एरिया में काम करो, रूरल रिवाइटलाइजेशन गोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉलिसी में फेल विदाउट रिफॉर्म ऑफ लॉ बारिंग रिटर्नीज फ्रॉम लीजिंग और ओनिंग लैंड और प्रोविजन ऑफ बेटर हेल्थ केयर, ऑब्जर्वर्स वार्न।
ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप लोगों को वहां भेजना तो चाहते हो, पर वहां का जो पॉलिसी ये है कि whoever goes to one who changes from rural to urban or urban to rural can't switch. So if you're an urban dweller and you are pushed to the rural areas, so the problem is that you can't own land there, you can't do anything. So if you can't do anything, you have no stake in that. Why will you work? So you need reform, huku. The previous step, he says, you change huku, taki people from villages can come to the towns to get better facilities. So what does China do? What can China do? So the requirement is both sides. And today, China doesn't have the kind of funds to completely fund the rural areas and lift up infrastructure there. क्योंकि वहां पैसा नहीं है. Okay. Now, in this, ये जो in this article which I am now showing you, there's a reference to an older article, and this article is of February. Okay. Again, see the headline. China says its plan to bring modern socialism to rural areas cannot afford to fail as external pressures mount. This as far back as in February. Let me give you a background. जब ये आर्टिकल आया था, ये भी ऐसे ही आर्टिकल था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, पर ये साउथ चाइना पोस्ट मॉर्निंग पोस्ट में इन द सेंटर देयर इज वन स्पॉटलाइट एरिया where important articles are kept. This was kept there for over 15-20 days. 10 दिन के बाद मैंने कहा यार ये आर्टिकल क्यों यहाँ है. मैंने पढ़ा इसको. जब मैंने पढ़ा, आई गॉट गूज बम्स ऑल ओवर माय बॉडी. यार ये तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नो वन हैज, एवरीवन हैज लेफ्ट इट. उस दिन मेरे को पता था कि ये इनका प्रॉब्लम is going to become more. And I had said this in one of my broadcasts also. And I'm saying it again. Those of you who are really interested, open this article and study it. But then even the headlines give you a good indication as to where it is going. China says its plan to bring modern socialism to rural areas can't afford to fail as external pressures move. Simple headline. But they have a annual document, central document. It spells out critical importance of developing and supporting China's poorest regions and their hundreds of millions of residents. It's a strongly worded document in latest show of strength by Beijing to bolster self-sufficiency out of concern of being strangled by other countries in key areas. Most importantly, ये जो document है, this talks of uh, the Communist China Party losing the grip on the countryside. That's the danger. This revitalization push and all this nonsense. If you read this article, you understand that if the divide between the rural and urban China increases, the unrest will start in the villages. The social contract जो है वो लोगों और सीसीपी के बीच में, ये यू गिव योर फ्रीडम टू मी एंड आई विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, वो कहाँ टूटेगा? ये अर्बन एरिया में नहीं टूटेगा, ये दो जगह टूटेगा. ये एक जगह टूटेगा रूरल एरिया में, क्योंकि वहां वैसे भी गरीबी है, गुर्बत है वहां. ये बताते नहीं है चोर. तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर वहां क्योंकि इनके पास अभी कोई स्टिमुलस वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो दे विल हैव गेट मोर प्रॉब्लम्स. और दूसरी बात, इनका जो यूथ का प्रॉब्लम है, अगर उनका देयर एस्पिरेशंस आर नॉट मेट, दे गोना हैव प्रॉब्लम. This
article in this document aims at that. Very, I mean, again, the earlier article and this are very innocuous looking things, but it hits at the root of Chinese, worry, the CCP's worry. That's why I brought it today. Okay, and then of course, August, Chinese manufacturing has been bombed out. Exports in August see in contraction for fifth straight month. Contracting, right? Now, so so the economy is not expanding. The outside external economy, internal. I've shown you the key problems. Structural problem is also there. If there is civil unrest, it'll come from somewhere in the villages. I mean, what is the thing about the villages? अगर आप इनका हिस्ट्री देखोगे, Mao, when he succeeded against the nationalists, Chiang Kai-shek, ROC, he started his movement in the villages. इनका डर यह है कि villages are going out of their control. तो ये धकेल रहे हैं ये एक्स सर्विसमैन को villages में जाके कब्जा जमाओ. So they have, it's a major issue which, right. Now we'll talk of the property sector और property sector का dominance के बारे में बात करेंगे. इससे पहले कि हम property sector के बारे में जो अभी हो रहा है इसके बारे में बात करें, I'll take you back to what I spoke in February. What did we say in this? China's property sector is not a deflation risk. It is the top economic worry. If China's economy has to go down, it will go down because of the property, and property will not revive. That's the deal. Okay, so just see what I spoke 6 months back, and you'll understand what I'm talking. Sector. Why is it? We must understand that the Chinese property sector constitutes nearly 1/4 of its economy. Right? And this is in distress. And it's been in distress for over a year now, ever since the Evergrande crisis broke out. Along with this, Xi Jinping had tightened the screws on the tech sector, educational tech, fintech, and even retail tech, and raid-hailing cabs, and Alibaba, and Tencent, and all of them. Right? They've been pruned. So that was 15% of the GDP. So 15% of the tech sector and 25% of the property sector, both are in serious trouble. And if these two are in serious trouble, where is China's GDP heading? And in case someone talks of the revival of the Chinese GDP, look at this sector. If this sector revives, then there is hope. Otherwise, Chinese GDP and growth is going to be stagnant. So let's understand this in a little more detail. Okay, so this is what I had said then. The property sector is the key to China. अगर ये डूब गया तो चाइना डूब जाएगा. इसमें मेरे को दो राय नहीं है. वहां से अभी तक कुछ बदली नहीं हुआ है. और उसके साथ साथ इनका जो फाइनेंशियल टेक सेक्टर और एजुकेशनल टेक सेक्टर एनीवे हैज गॉन कंप्लीटली. So there is 30 to 40% of your economy which is not going to revive. Okay, why will this not revive and why there's a problem? We'll see a series of headlines which have connected on the property sector and the tech sector. Okay, China property, how the world's biggest housing market emerged. But the heading is not a great thing in this. What is written inside is the great thing. He says home ownership in China's ultimate symbol of success, the mark of
adulthood, readiness for a family, and ownership of one's financial destiny is owning a flat. Flat सब कुछ है इनका. Chinese citizens devote as much as 74% of their savings towards housing, compared with 35% in the US, according to research. अब सोचिए, प्रॉपर्टी इज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, क्योंकि अगर मेरे पास मेरा पूरा 75% मेरा सेविंग जो है वो फ्लैट में है, और फ्लैट का कीमत डाउन हो गया है, और बहुत जगह में मैंने पैसा दे दिया और मेरे को फ्लैट नहीं मिलने वाला है, तो मेरा हाल क्या होगा? मैं कौन सा जाके फेरारी खरीदूंगा? फेरारी छोड़ो, मैं एक मारुति भी नहीं खरीदूंगा. मैं तो बोलूंगा भाई साइकिल में काम चला लो. ये तो स्वाभाविक है ना. जब तक ये प्रॉपर्टी सेक्टर इनका रिवाइव नहीं होता, लोग गरीब होंगे. ओके, तो गरीब तो होंगे ही, और गरीब रहेंगे भी, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है. नौकरी क्यों नहीं है? जैसे मैंने पहले देखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है तो नौकरी नहीं मिलेगा. ओके, हाउ चाइना's property and debt crisis limits policy makers ability to revive the economy. इसका मतलब बड़ा क्लियर. इतना कर्ज में डूबे हुए हैं सब कि दी गवर्नमेंट, इनका गवर्नमेंट, इनको ये नहीं पता कि करना क्या है आगे. दैट्स द प्रॉब्लम. इनको ये नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि हम करें क्या. ओके, सो an overly indebted economy means China cannot afford to roll out a massive stimulus and is facing a much slower growth trajectory. ये बार बार ये स्टिमुलस के बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्यों सब बात कर रहे हैं? जब 2007 में लेमन ब्रदर्स का जो प्रॉब्लम हुआ था, तो एवरीवन वाज इन अ प्रॉब्लम. The Chinese government came out and gave a massive stimulus to people. They put money in the people's pocket, put money in various sectors and revived the economy. अगर वो ना करते तो उसी वक्त ये कोलैप्स हो जाता. पर अभी ये नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त क्या है, प्रॉपर्टी सेक्टर वाज द मोस्ट थ्राइविंग सेक्टर 2007-8 में. सब पैसा लगा रहे थे, सब निवेश कर रहे थे, सबको आशा था कि ये प्रॉपर्टी सेक्टर हमें बहुत पैसा देगा आगे जाके. इनका खुशहाली का नींव प्रॉपर्टी सेक्टर था. अभी तो वो आशा नहीं है, तो किसको देंगे निवेश? ये सब कर्ज में डूबे हुए हैं, पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है. ठीक. सो इसीलिए ये आर्टिकल के ऊपर ही मैंने वो चाइनीज डोमिनोज इफेक्ट, इन्हीं का, इस आर्टिकल से ही मैंने लिया था वो कवर. राइट. ये क्या बोलता है? चाइना प्रॉपर्टी क्रैकडाउन, व्हाई सरप्राइज विक्टिम कंट्री गार्डन कुड बी वर्स देन एवरग्रांड फॉर द इकोनॉमी. ये कंट्री गार्डन है, ये भी एवरग्रांड की तरफ बड़ा डेवलपर था, डेवलपर है. ताकि नहीं, अभी तो डूबने दो, जब डूब जाएगा ताकि बात करेंगे. सब सोच रहे थे कि जब एवरग्रांड पिछले साल डूबना शुरू हुआ कि ये कंट्री गार्डन चलता रहेगा, और चलता रहा, और फ्लैट दे रहा था, वो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा था, सब कुछ ठीक था. पर अचानक 2 महीने पहले ये बॉन्ड पेमेंट मिस कर दिया, इसके पास कर्ज रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह. अगर ये इस स्तर तक आ गया, एंड दिस वाज सपोज टू बी द बेंचमार्क कि ये सबसे बढ़िया डेवलपर है, ये नहीं डूब सकता. अगर यही डूब रहा है तो बाकियों का हाल क्या होगा? बात ये है. कंट्री गार्डन हमने सुना ही नहीं पिछले, जब इसके बारे में, बाकी ग्रुप्स के बारे में सुना, इसका नाम कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं कर रहा था. राइट. और अभी क्या हालत है? कंट्री गार्डन टू सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ एटलीस्ट 10 ऑनशोर बॉन्ड्स. ये इंटरेस्टिंग है. बात यह है कि
वाई ये किस लिए इंटरेस्टिंग है कि 10 ऑनशोर बॉन्ड्स, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये नहीं कि सस्पेंड ट्रेडिंग। ऑनशोर बॉन्ड का मतलब क्या है? ये बॉन्ड के जरिए पैसा उठाते हैं तो मार्केट से, जैसे हमारा रिजर्व बैंक भी बॉन्ड देता है और अब से पैसा लेता है, ये मार्केट में जाके ये बॉन्ड देके पैसा उठाते हैं। और ये बॉन्ड का क्या होता है? ये बॉन्ड बिकता है वापस लोगों को, लोग खरीदते हैं, निवेश होता है, सिक्योरिटी फर्म निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म इसके अंदर निवेश करते हैं पैसा बॉन्ड खरीद के, कि ये उम्मीद है इनको सूद मिलेगा और ये अमीर हो जाएंगे। आखिर इसका निवेश कहाँ से आता है? एक आम आदमी से आता है, आप और मैं, हम, या हमारे जैसे। ये बॉन्ड में ट्रेडिंग बंद हो गया तो इसका मतलब बॉन्ड एट रिस्क। जिसको निवेश किया, जिसने भी निवेश किया, उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। आप सोचो, एक आम आदमी अगर वो फ्लैट खरीद के खरीद लिया तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है। बॉन्ड में अगर उसने पैसा लगाया तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला वापस। तो उसका सेविंग कहाँ है? गया। उसका गया तो वो खरीदारी क्या करेगा? जीरो। तो चाइना का इकोनॉमी कहाँ ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। और पहले आर्टिकल में मैंने बताया लोग बुढ़े हो रहे हैं, और ये पहले भी मैंने बताया कि इनका आबादी घट रहा है और आबादी बुढ़ावस्थाओं में जा रहा है। वर्कमैनशिप है ही नहीं इनके पास, लोगों का पैसा गायब हो रहा है। ये कैसे वापस ऊपर रहेगा? मैं भी तो कुछ जानू। सी, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट फंडामेंटल कॉमन सेंस लगाइए। ठीक। कंट्री गार्डन, राइट, ये इनके सबसे बड़ा ये है। यू सी कि इनका जो रीच है हर शहर में है चाइना के अंदर, हर शहर में इनका प्रोजेक्ट है। ईस्ट में ज्यादा है, यहां तक जिंजियांग और तिब्बत में भी इनका प्रोडक्ट्स है, इनका बिल्डिंग्स है, सब डूब गए। ओके। और एक केस ग्राफ है, कंपैरिजन कंट्री गार्डन वर्सेस एवरग्रैंड। कंट्री गार्डन के प्रोजेक्ट ज्यादा है, 3100 पूरा चाइना के अंदर, और एवरग्रैंड का 1200। हमने सोचा एवरग्रैंड इज द बिगेस्ट, एंड बट ये तो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इट्स ऑलमोस्ट 2.5 to 3 times। बट एवरग्रैंड का जो ऑफशोर डेट ज्यादा है, बैंक बोरोइंग्स भी ज्यादा है उसका, इसका कम है, पर ये भी डूब रहा है अभी, और बढ़ेगा। लायबिलिटीज 100, आई मीन इट्स ऑल बिग। एवरग्रैंड के एम्प्लॉयज ज्यादा है। एवरग्रैंड का ये पूरा फिगर्स, दे आर बिगर बिकॉज एवरग्रैंड वाज मोर अर्बन ओरिएंटेड, बड़े शहरों में इनका कारोबार था, और ऑफशोर कारोबार थे, और अलग अलग कारोबार थे। पर कंट्री गार्डन जो है ना, सिर्फ फ्लैट बनाते। तो कंट्री गार्डन को जो 3000 प्रोजेक्ट है, किसको छुएगा? आम आदमी को। एवरग्रैंड किसको हाथ लगाया, किसके सर पे हाथ लगा दिया? अमीरों के हाथ, सर पे। सर के हाथ ऐसे नहीं, उसको भस्म करने के लिए। सो बोथ अमीरों को और गरीबों को इसमें, both have got hit in Evergrande and Country Garden. So there's a big problem. Okay. Not only all this, since Evergrande's collapse, several other major developers, Kaisa, Fantasia, Shimo, I never heard of all this nonsense. They all defaulted. All big groups have defaulted. Okay. There's another thing called Sino-Ocean. He says in this article, the interesting thing is not about country garden, property crisis, breaking point वगैरह, एक और है Sino-Ocean, ये भी गया।
इसीलिए डोमिनो है, एक गिर गया दूसरा तीसरा तीसरा चौथा गिरता जा रहा है, इसके साथ साथ बाकी इंडस्ट्री भी लेके जा रहा है साथ साथ। लोग क्या है, ये अगर आर्टिकल देखेंगे और इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, लोग घर खरीद नहीं रहे हैं वहां। नो वन इज बाइंग हाउसेस देयर, सब वेट कर रहे हैं। वो चाइना वाला भी थोड़ा दिमाग है ना उसमें। वो वाई इज द आम चाइना मैन वेटिंग कि जब प्रॉपर्टी प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तब जाके हम खरीदेंगे, तब तक पैसा लगा पकड़ के रखेंगे। और वो पैसा पकड़ के रख रहा है घर खरीदने के लिए, क्योंकि उनका देयर साइकोलॉजी इज टू बाय अ हाउस। वेट कर रहा है कि जिस दिन घर का कीमत बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उस दिन जाके मैं खरीद लूंगा। If he's waiting for a cheap house to buy and all the money he has is holding on, he'll not consume. So where will the consumption economy revive? I mean, you just see how it is connected. It's connected with people. At the end of the day, economy is about people. If the people are not pushing the economy, you're sunk. And that's what's happening with China. China's economy was absolutely fine till such time it had markets outside. Those markets are not going to come back. Some markets will be there. It's not as if everything will not. But those boom time markets will not happen. High-end technology will not be sold outside China. Within China, there's no buying power. Yeah, some people will be there who are very rich in China, they'll manage. Okay, in this article, if you go into details, China too big to fall property giants, just the tip of the real estate crisis, as suppliers are being dragged to death. कोई पाइप दे रहा है, कोई सीमेंट देने वाला है, कोई कांच देने वाला है, कोई कुछ और देने वाला है. Someone is giving services to these places. Everyone is down as per this article. If you read this article, you see the effect of the property crisis on other industries. If the cement chap is not going to make cement and sell, all his entire thing is gone, and other chemicals will also go. Same with paints. After all, property is a big sector. Property is a big driver of any economy. And in China, it's the biggest. So this article tells you that. Okay. Bank of China, ICBC see profit growth drop sharply as slowing economy, property crisis it takes a toll. So the banking is hit. It's not only the other industry, the banking is hit. The property can't revive because people are not buying property. And people can't buy property because what money they have, they're holding on. Or if they invested in a flat, they don't have a flat, so they can't do anything. They don't have a job. Those who have invested in bonds, property bonds, they're not getting anything back. Just see the circle. It's a vicious circle. This is not deflation. Everyone said Evergrande जब होगा, it's not Lehman movement, ये movement, वो movement, ये तो movement से movement ही है. The whole bloody thing is collapsing. Okay. Bank of Communications, China Merchants Bank report increasing bad loans among property crisis. So everyone who's taken loan will not return back. No one will return back. And if you see externally, जिसने भी बीआरआई में लोन लिया वो भी वापस पैसा नहीं देगा. क्या पाकिस्तान पैसा देगा चाइना को? पाकिस्तान ने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया. So there's a problem. So ये है debt and property. But why I showed this picture? Just see carefully. You think it looks like a dragon? मेरे को तो मुर्गी लग रहा है ये कौन सा ड्रैगन है? ये तो मुर्गी है. तो मतलब आज के दिन चाइना का हालत एक मुर्गी का हालत है. ओके, लेट्स लुक एट दिस. व्हाट डज दिस चैप से? ही सेज China's record annual limit for infrastructure boosting bonds to be spent by October.
So what's the government doing? That's the point in this. That's the is something we have to understand. So they're going to give record bonds for infrastructure which is of use, no use. And who will buy the bonds? The people. So China is investing into infrastructure and raising money through infrastructure bonds for infrastructure which it doesn't need. If it doesn't need that infrastructure, there's no return on investment. If there's no return on investment, who will cop it? The people. So the people of the People's Republic of China are getting poorer by the day due to the government policies. If people of the People of Republic of China are getting poorer, how will the economy revive? This is what I had to say, and with this, I'll rest my case. But then I'll not rest my case completely because there's one article which I saw today. I couldn't, filch it out, which says it's in the South China Morning Post that if China seems to be adopting the same policies which it has adopted to arrest the one child policy which has failed. You see, क्या हुआ कि ये वन चाइल्ड पॉलिसी कोई नया पॉलिसी नहीं है, पुराना है। और ये इसके अलावा दे न्यू द प्रॉब्लम्स लॉन्ग बैक, सो दे स्टार्टेड टू चाइल्ड पॉलिसी। टू चाइल्ड पॉलिसी भी नया पॉलिसी नहीं है, ये 20 साल पुराना है। 2006-7 में इन्होंने शुरू कर दिया कि दो चाइल्ड पॉलिसी, बट द पॉलिसी ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी वाज सो पुअर दैट इट फेल्ड, it continued to fail, and China kept sweeping it under the carpet. And now they're coming out to the whole lot of firefighting policies for reversing the trend: three-child policy, two-child policy, incentives, school fees, this that. It's not working. So this article says the policies being adopted by China to resolve the property crisis are similar to the policies adopted by China to resolve its one child or reverse the one child policy. It will not work. It will fail. So that is China for you. And here I rest my case. Okay. Now we'll take the questions. Uh, I hope you have some questions on this. I see a few other questions, but we'll take all. Don't worry.